Children, let's continue with our topic of depository receipts. We have already seen GDR, that is Global Depository Receipt. I had told you that if an Indian company it enlists itself on stock exchange of America, then it is called American Depository Receipt, and if it is in any European country, then we call it GDR, that we have already studied about its advantages and disadvantages. Let's now learn a little more about ADR. So American Depository Receipts are the stocks of the foreign companies which are traded in the American markets. I told you the procedure is same for both of them, whether it is GDR or ADR. The procedure will remain same. The company like deposits its shares into a domestic custodian bank. From there, they are passed to the overseas depository bank, and from that overseas depository bank ODB, these receipts are issued to the investors. So here also it is the same thing. American Depository Receipt is a certified negotiable instrument issued by an American bank suggesting the number of shares of a foreign company that can be traded in US financial market. One important thing here is that these receipts, they may include more than one share. लाइक 1 GDR में 10 शेयर्स हो सकते हैं, 1 AMR में 10 और 20 शेयर्स भी हो सकते हैं. सो दिस इज समथिंग फॉर यू टू नो. Let's now see advantages and disadvantages of ADR. Advantages of ADR, American Depository Receipts, are American investor can invest in foreign companies which can fetch him higher returns. अमेरिकन का जो लोग हैं वो किसी भी इंडियन कंपनी और किसी कंट्री की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड दैट कैन फेच देम हायर रिटर्न. ज़्यादा उनको रिटर्न उस पर मिल सकता है जितना अपनी कंट्री के अपनी कंट्री लाइक अपने डोमेस्टिक किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके मिलेगा, उससे ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है. द कंपनीज located in foreign countries can get registered on American Stock Exchange and have its shares traded in 2 different countries. अब कोई इंडियन कंपनी है, वो यहाँ पर इंडिया में भी स्टॉक एक्सचेंज पर एनलिस्टेड है, यहाँ भी उसके शेयर्स सेल आउट हो रहे हैं, यहाँ से भी वो फंड रेज कर रही है, और अगर किसी फॉरेन लैंड पर वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में भी खुद को एनलिस्ट करती है, तो उसका मार्केट बढ़ जाता है और 2 डिफरेंट कंट्रीज से उसके फंड्स को जनरेट करने के सोर्सेज बन जाते हैं. The benefit of currency fluctuation can be availed. Like sometimes what happens, the currency 2 different nation की उसमें fluctuation रहता है, तो उसके भी benefits मिलते हैं. Disadvantage क्या है? They are exposed to the risk associated with foreign exchange fluctuation. This can be a benefit, this can be an advantage as well as a disadvantage. अगर value बढ़ गई है तो it is an advantage. If value कम होकर उसका return कम हो गया है, then it becomes a disadvantage also. The number of options to invest in foreign companies is limited. Like limited means सिर्फ ये GDR और ADR ही ऑप्शन रहते हैं. बाकी लाइक इंडिया में हम देखते हैं कि और भी तरह के डिबेंचर्स जिसे हमने पढ़ा था, दैट टू इज़ अ वे ऑफ इन्वेस्टिंग. वो डोमेस्टिक कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू इन्वेस्ट योर मनी इन अ डोमेस्टिक कंपनी. आप अपनी कन्वीनियंस देखकर यू कैन इन्वेस्ट इन डिबेंचर्स, यू कैन इन्वेस्ट इन पब्लिक डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म के लिए जो होता है उसमें भी कर सकते हैं. बट फॉरेन इन्वेस्टर्स को सिर्फ यही ऑप्शन अवेलेबल होता है. Any violation of compliance can lead to strict action by Securities Exchange Commission. This we had seen in case of GDRs also. Here also the same rule applies. So that was all about ADRs. Let's now see Indian Depository Receipts, IDRs. Now here you Indian, इसमें क्या होता है, अभी हमने प्रीवियस जो 2 टाइप के डेपोजिटरी रिसिप्ट पढ़े, उसमें वी वर टॉकिंग अबाउट एन इंडियन कंपनी रेजिंग फाइनेंस
from foreign land, America or European country. Now here IDR, when we are talking about IDR, we actually mean foreign companies trying to find investors in India. कोई foreign की company आकर Indian से अगर invest करवाना चाहती है, that तो यहाँ के इंडिया के इन्वेस्टर्स को जो रिसिप्ट इशू की जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड इंडियन डेपोजिटरी रिसिप्ट्स. For ADR and for GDR, the denomination has to be in dollar, but in IDR it has to be in rupees. Because यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर कोई बाहर की फॉरेन कोई कंपनी आकर यहाँ से फंड रेज करती है एंड IDRs आर इशूड बाय द इंडियन depository bank, then they will be in rupees. So this is something very important for you to understand. All right, so what is IDR? An IDR is an instrument in the form of a depository receipt created by the Indian depository. Now again the process is same. जैसे हमने ADR और GDR के केस में पढ़ा था कि जिस कंट्री में कोई कंपनी है, कोई बिजनेस फर्म है, वहाँ पर कस्टोडियन बैंक होगा. देन जहाँ से हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, जहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं हमारे, जहाँ हमें फंड्स जहाँ से लेने हैं, जहाँ पर हम फंड रेज कर रहे हैं, वहाँ पर जो बैंक होगा दैट विल बी डेपोजिटरी बैंक. नाउ इन दिस केस, इन केस ऑफ IDR व्हाट हैपेंस, जो जहाँ जिस कंट्री से वो कंपनी आ रही है, वहाँ जो बैंक होगा दैट विल बी कस्टोडियन बैंक, एंड इंडियन बैंक विल सर्व एज अ डेपोजिटरी बैंक टू इशू द डेपोजिटरी रिसिप्ट. So, depository in India against the underlying equity shares of the issuing company in order to enable foreign companies to raise funds from the Indian markets. So, this is what we mean by IDR. Alright, let's try to understand the features of IDRs. Overseas custodian, now जैसे अब IDR के केस में क्या होगा, custodian bank, overseas bank जो होगा that will be custodian bank, हमारा domestic bank जो होगा that will serve as a depository bank. So foreign bank with branches in India that will serve as a custodian bank requires approval from Finance Ministry and has to be registered with SEBI. SEBI is what? SEBI is Securities and Exchange Board of India. तो उसका अप्रूवल होना चाहिए फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड सेबी से. Approvals for the issue. IDR issue will require approval from SEBI and application can be made for this purpose 90 days before the issue opening date. Listing. These IDRs would be listed on stock exchange in India and would be freely transferable. यहाँ पर जो holders होंगे IDRs के, they'll be having their listing on the Indian stock exchange, and these IDRs, they are freely transferable. They can get them transferred to equity shares also, and they can even transfer them to other people also who are interested in acquiring them. Extent of issue. The issue during a particular year should not exceed 15% of the paid up capital plus free reserves. Redemption. IDRs would not be redeemable into underlying equity shares before 1 year from the date of issue. Denomination. IDRs would be denominated in Indian rupees irrespective of the denomination of underlying shares. और वो shares जिस company से आ रहे हैं उसका जो भी denomination हो, but यहाँ पर IDRs जो हैं when they will be issued, they would be denominated in Indian rupees. Let's now see how will IDRs be issued. Who will participate? IDRs will be issued to Indian residents in the same way as domestic shares are issued. जैसे हम अपनी डोमेस्टिक कंपनीज के शेयर्स परचेस करते हैं, उसी तरह से ये IDRs भी इशू होंगे, एंड पीपल कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन फॉरेन कंपनीज एंड दे कैन बी इशूड IDRs in the same way as they are issued the domestic shares. NRIs can also participate in the issue. Next is, the issuer company will make a public offer in India and residents can bid the same way as they do for Indian shares.
Investors eligible to participate in an IDR issue are institutional investors, including FIRs, but excluding insurance companies and venture capital funds, retail investors, and non institutional investors. Commercial banks may participate subject to approval from RBI. So, this was about the participants who all can participate in IDRs, who all can issue IDRs. So this finishes our topic of depository receipts. We'll in the next session we'll just try to know the basics of the borrowed funds. I had already given you definition of all sorts of borrowed funds. Also debentures we have already discussed in detail. Other forms of borrowed funds like public deposits, commercial banks, financial institutions. We'll just go through bits of, the details about these topics in the next session. So this is all for today. Thank you.